Assalamu alaikum. So students, in our last lecture, we learned about place values. हमने ये चीज़ सीखी थी कि किसी भी नंबर के अंदर place values के क्या नाम होते हैं. The second thing we learned was the values of those places. And हमने ये चीज़ भी सीखी थी कि जो नाम होते हैं वही values भी होती हैं उन places की. Today's topic is place value in abacus. आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेस वैल्यू अबैकस में कैसे दिखाई जाती है और उसका क्या इस्तेमाल है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, व्हाट इज़ अबैकस. अबैकस क्या चीज़ होती है हम इस बारे में जानेंगे. प्लेस वैल्यूज इन अबैकस. अबैकस के अंदर प्लेस वैल्यूज किस तरह से दिखती हैं. एंड फाइनली हाउ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड और शोन ऑन अबैकस. यानी कि हम नंबर्स को किस तरह से अबैकस के ऊपर दिखा सकते हैं. So students, let us start our today's lecture. So first of all, what is abacus? Abacus क्या होता है? So abacus is a tool. Abacus एक इस किस्म का टूल है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर्स को दिखाने के लिए. That represents numbers and calculations, और calculations करने के लिए. But this is the important part and the most important functionality of abacus. Abacus की सबसे ज़्यादा अनोखी और ख़ुसूसी बात यही है that we represent numbers and calculations in a visual form. हम abacus इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी आँखों के ज़रिए देखते हुए calculations या numbers perform कर सकें. So now, what are place values in abacus? हम abacus के अंदर place values कैसे represent करते हैं. So students, for any number to be represented we need two things. हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. The first thing is place value and the second thing is digits. So how can we represent these two things? हम ये दो चीज़ें कैसे दिखाएंगे अपने abacus पे. So first of all we have place values. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी राइट, अगर हम सबसे राइट साइड पे देखें तो हमारे पास वंस प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए एक टावर है. इन द मिडल वी हैव अ टेंस प्लेस वैल्यू एंड वी हैव अ टावर ऑन इट. एंड फाइनली ऑन द वेरी लेफ्ट वी हैव हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू एंड वी हैव हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू का टावर ऑन इट. सो नाउ these are the place values. How we are going to represent the digits? हम digits कैसे represent करेंगे. तो इसके लिए हमारे पास कुछ rings या beads, some sort of rings or beads are used to represent the different digits on different place values. So class, let us do some practice question and let us see how can we use this abacus to represent different numbers. हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So show the given numbers on abacus. So the first number जो हमें दिया गया है और हमने abacus के ऊपर show कराना है, that is 253. So first of all let us make us a abacus. हमने सबसे पहले अपना abacus बनाया with its place value. So now we have to write the number 253. So the simple rule is the digits will be represented by the number of rings or beads. अगर हमारे पास ones place पे digit 3 है, so we can represent it by 3 rings. Similarly we have 5 on a tens place, तो हम इसको represent कर सकते हैं 5 rings के साथ 5 की. Similarly हमारे पास hundreds place पे है 2, so we can represent it by only 2 rings. So this is how you can represent a number on an abacus, that is 253. और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास नंबर हो 465, तो हम इसको अपने abacus पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वन प्लेस वी हैव द डिजिट 5. सो 5 बीट्स हम डाल देंगे अपने वंस प्लेस के टावर पे. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास टेंस प्लेस पे है डिजिट 6. सो हम अपने टेंस प्लेस के टावर पे 6 रिंग्स डाल सकते हैं. और फाइनली
100 प्लेस पे हमारे पास डिजिट 4, जिसके लिए हम अपने 4th प्लेस के टावर पे 4 रिंग्स डाल सकते हैं. And finally, let's do another number, that is 530. So we have our abacus. So this time we will be starting from the left hand side, that is the 100 place value. So on the 100 place value we have the digit 5. So we can represent it by 5 rings. 5 rings के साथ हम इनको दिखा सकते हैं. Then on the 10th place tower we have the digit 3. So हम इसको 3 रिंग्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. And finally we have the digit 0 at the ones place. So हम यहाँ पे कोई रिंग नहीं डालेंगे, we will keep it empty. So these are the three numbers, 253, 465 and 530, represented in a visual form on an abacus. आप अपनी आंखों से देख सकते हैं ये numbers abacus के ऊपर. So class, now students, let's do one more thing, that is guess the numbers shown on abacus. So अब हमने guess करने होंगे numbers. So in our first example we have some numbers. So what we are going to do, हम बिल्कुल वही काम करेंगे. We have to count the number of beats and write the digits. हम rings गिनेंगे और digits लिखते जाएंगे. So starting from the ones place we have 2 rings, so we write the digit 2 for it. Then in the next 10th place tower we have the 5 rings in it, so we write the digit 5. And finally in the 100th place tower we can see we have 4 rings, so we can write the digit 4. So this abacus, ये जो abacus है ये हमें क्या नंबर शो कर रहा था, और ये हमें 452 का नंबर शो कर रहा था. So moving on, we have another abacus with another number. So again हमारे पास यहाँ पे एक और नंबर आ गया है. So let's try to solve this. So अगर हम सबसे पहले ones place पे देखें तो हमारे पास 3 rings हैं. So this means this is a digit 3. इसी तरह अगर हम अपने 10th place tower को देखें तो we have 2 rings हैं इसके अंदर. So this means it's a digit 2. और बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने 100 प्लेस टावर को देखें तो इसके अंदर हमें 5 रिंग्स दिख रहे हैं, विच मीन्स इट इज़ अ डिजिट 5. सो एज अ होल दिस abacus is representing the number 523. And finally class, one last example for the abacus. अगर हम यहाँ पे अपने पास देखें तो हमारे पास वंस प्लेस पे 4 रिंग्स हैं, विच मीन्स इट्स अ डिजिट 4. सिमिलरली for the 10th place tower we have only one ring, meaning ये एक सिंगल डिजिट है, दैट इज़ 1. एंड फाइनली 100 प्लेस की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6 रिंग्स है, मीनिंग दैट इज़ अ डिजिट 6. सो एज वी कैन सी अगेन वी हैव 3 डिफरेंट नंबर्स, 452, 523 एंड 614, जो कि एक पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाए जा रहे हैं ऑन एन abacus. So students, I hope you have learned what place values are in an abacus. So thank you for watching and please like and subscribe. Take care and Allah Hafiz.